Kepler's laws of planetary motion. What is Kepler's laws of planetary motion? This article is brought to you by Target Your Goal Coaching Center, located in Shiv Mandir near North Bengal University. So, what is Kepler's law of planetary motion? There are three laws basically. The orbit of a planet is an ellipse with the Sun at one of the two foci. Number 2, a line segment joining a planet and the Sun sweeps out equal areas during equal intervals of time. Third, the square of a planet's orbital period is proportional to the cube of the length of the semi-major axis of its orbit. कुछ समझ में आया? नहीं. See, Kepler's law basically जो है, ये जो प्लैनेट का मोशन है अराउंड द सन, तो कोई भी प्लैनेट है तो वो कौन से लॉज के अकॉर्डिंगली सन के चारों तरफ घूम रहा है उसी के बारे में है. तो टू स्टार्ट विथ, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, द यूनिवर्स, एज यू कैन सी, दिस इज द क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज एंड दिस इज आवर मिल्की वे गैलेक्सी एंड अर्थ इज जस्ट वन ऑफ द planet in one of the solar system. So as you can see here कि जो हमारे जो planets हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो ये तो ऐसा नहीं है कि वो it can revolve without any rules and regulation. There is some rules and regulation. तो उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को जोहान्स केपलर ने अपने लॉज में बताया है कि कोई भी प्लैनेट जो है कि जो सन के चारों तरफ अगर घूम रहा है तो किसी लॉज के अकॉर्डिंगली वो घूमेगा. तो वो लॉज क्या है? वही आपका केपलर्स लॉ है. तो जोहान्स केपलर के बारे में हम थोड़ा जानते हैं. He was born in 27 December 1571 in Germany and he studied in Tübingen University in Tübingen. तो जोहान्स केपलर ने काफी रिसर्च किया. He was basically an astronomer and he is from Germany, as you can see this place Tübingen. And उन्होंने रिसर्च जो है टाइको ब्रेही के साथ मिलके किया था. टाइको ब्रेही उनके सीनियर थे. ही वाज आल्सो एन एस्ट्रोनॉमर. तो टाइको ब्रेही और जोहान्स केपलर ने मिलके ये केपलर्स लॉ को बनाया था. बट बेसिकली टाइको ब्रेही ने काफ़ी एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्ट किया था एंड एज ए गुड मैथमेटिशियन केपलर ने फिर उसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया. सो दिस इज इन डेनमार्क एंड केपलर के डेथ के बाद जब अपोलो 12 मून पे गया था तो ये क्रेटर का नाम उनके डेथ के बाद केपलर रखा गया उनके मेमोरी में. एंड दिस इज टाइको ब्रेही प्लानिटेरियम. मुझे मौका मिला था इन 2015 टू गो टू डेनमार्क. तो मैंने वहाँ पे, मुझे काफ़ी इच्छा था तो मैं टाइको ब्रेही प्लानिटेरियम गया था. एंड इट्स अ वेरी नाइस प्लेस वेयर लॉट ऑफ साइंटिफिक थिंग्स आर देयर, स्पेशली एज यू कैन सी meteorites and different things are there. So Tycho Brahe Planetarium in Denmark, very nice place. And well, Tycho Brahe and Johannes Kepler ने ये जो रिसर्च किया था जो आप आज भी यूज होता है एंड उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो व्हाट आर द थ्री लॉज? तो फर्स्ट लॉ है the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the two foci. So orbit of a planet, so what is ellipse and what is foci? तो जैसे आप देख सकते हैं कि ellipse is nothing but, अच्छा ये एक अंडाकार है तो अंडा
का जो शेप है दैट्स लाइक एन एलिप्स एंड तो आप जो देख सकते हैं कि उसका जो इक्वेशन है द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स एंड बेसिकली जैसे हम या आप दो पिन लेके इसको आप देख सकते हैं तो इफ यू कैन टाई थ्रेड एंड इफ यू कैन just rotate it and you can draw a ellipse on a paper और ये जो दो पिन है ये दो पिन आपका is one of the focus। तो जो जोहान्स केपलर ने बताया था कि जैसे मेजर एक्सिस जो the longer radius as you can say is the major axis and the minor is the vertical part, so and major is the horizontal part। so what Johann केपलर ने जो बताया था कि as per the first law कि sun is the planets are going around the sun in elliptical orbit with the sun at one of the two foci। so this is first law, very simple law और जस्ट आपको लोगों को याद रखना है कि इट इज एन एलिप्स एंड जो फोकस है वहां पे आप सन को आप रख सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू द सेकंड लॉ, Kepler's laws of planetary motion, second law, a line segment joining a planet and the sun sweeps out equal areas during equal intervals of time। so what does that mean? That means that कि जब हमारा अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है तो एक महीना में फॉर एग्जांपल इन वन मंथ वट एवर एरिया इज कवरिंग वेदर इज farther away from the sun or whether is the near the sun, so irrespective of the distance from the sun in equal time, say 1 month here and 1 month here, so in equal time is going to cover equal areas, so a1 a2, so this is a1 is equals to a2। it's very simple that the second law says that a line segment joining a planet and the sun sweeps out equal areas during equal intervals of time। so hope this is clear। now coming to the third law, the square of a planet's orbital period is proportional to the cube of the length of the semi-major axis of its orbit। see, in this case the orbital period refers to the time taken by the planet in going around the respective star, in this case it is sun। तो जो टाइम लगता है अर्थ को सन के चारों तरफ घूमने में, उस टाइम का अगर हम स्क्वायर कर देंगे और ये जो मेजर एक्सिस है 2a, द हॉरिजॉन्टल द बिगर रेडियस इफ यू कैन थिंक इट लाइक दैट, सो इसका जो हाफ है यानी हाफ ऑफ 2a इज a, तो उसका क्यूब के प्रोपोर्शनल में होगा। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो चीज है आपका थर्ड लॉ में आ जाता है। सो इट्स वेरी सिंपल, वंस अगेन लेट मी रिपीट, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड और जो मेजर एक्सिस का अगर हम क्यूब कर लेंगे तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। सो दैट्स योर third law, and as you can see this gmm by r square is mv square by r। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी हम इसे डराइव कर सकते हैं। सो द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ इक्वेट करेंगे एंड स्पीड इज v is 2 pi r by t। सो अगर हम v को mv square by r में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर t square is equals to 4 pi square by gm into r cube। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी ये प्रूफ हो जाता है। सो दैट्स ऑल योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ Kepler's third law of planetary motion। so the square of a planet's orbital period is proportional to the cube of the length of the semi-major axis of its orbit। so hope this is clear। so in short,
once again, if I repeat that Kepler's laws of planetary motion is, the first law is the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the two foci. Number 2, a line segment joining a planet and the sun sweeps out equal areas during equal intervals of time. And third जो है कि जो orbital time period है, that is proportional to the length of the semi-major axis of its orbit. So this is what Kepler's laws of planetary motion है, और ये बहुत simple है in terms of like it is setting the rules for a particular planet to go around its star, that is sun in this case. So this is just a set of rules and regulations for the motion of the planets around its sun. And if you want to join our offline classes, so it's located in Simmandir near North Bengal University. You can call on the number given and schedule any classes if you want. And this is where it's located, near University of North Bengal. And so, as I said once again, is that what is Kepler's law? So Kepler's law is nothing but it is your rules that planets are following to go around the respective sun. And so this is what Kepler's laws of planetary motion is. Hope you have understood it.